हेलो 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 माइक टेस्ट। कैसे हो गाइस? हेलो राहुल, हेलो आदित्य, क्या हाल है? आई एम गुड। आप बताओ आदित्य, व्हाट्सअप? वैभव बेबी भाई वाचिंग ओवर। बेबी भाई क्या होता है? हैं? बेबी भाई क्या होता है? व्हाट? ओके। हाँ, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी प्रीटी लेट। यस, मैंने देखा, बट इट वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। व्हाई डिड यू पोस्ट इट? ऐसे फर्क नहीं पड़ता कोई। भिंडी का सांबर और चावल। भिंडी का सांबर और चावल या भिंडी का सांबर, ये क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये। इज दैट समथिंग डिफरेंट? मैं बार बार न्यू गेम पे क्यों क्लिक कर देता हूँ? चेहरा कहाँ है? अभी आएगा थोड़ी देर में। चिकन कबाब, चपाती, मटर की सब्जी, दाल चावल खाया विद पाइनएप्पल, वाटरमेलन, फ्रूट्स। इतना सब खा गए भैया तुम? कैसे खा गए इतना सब? हाँ हाँ। सो गाइज, आज अगर ख़त्म हो गया गेम, जो कि होगा प्रॉबली, सो इफ वी क्या लिखा था, रीच द एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्टोरी ऑफ द गेम। Would you be interested? Okay, I was putting up a poll. ब्लिंकिट किया क्या? ब्लिंकिट क्या करना है? कैसन बा ससरा सुसरा? व्हाट द फक? ये कुछ नया लेके आया है? ओके। सांबर जो है उसमें वेजी डाला और भिंडी। अच्छा, ओके। हॉस्टल में ब्रू वीकली 3 बार चिकन देते हैं। वाह, क्या बात है। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन। सो अभी जहाँ हम आए हैं, आई थिंक दिस इज़ द फाइनल लोकेशन ऑफ द गेम, जहाँ तक मुझे पता है। एंड आई नो जितने भी लोग अभी चैट में किसी ने भी पूरी स्ट्रीम्स नहीं देखी हैं, आई कैन गारंटी फेथफुली कि किसी ने भी आप लोगों में से पूरी स्ट्रीम्स लास्ट की नहीं देखी है। आई थिंक सो आई डोंट नो आप लोगों ने फिर बाद में ऑफलाइन देखी या नहीं देखी, मुझे नहीं पता है। बट दिस इज़ वेयर वी एंडेड द स्ट्रीम यस्टरडे, एंड दिस इज़ द लेक व्यू होटल, जो कि फाइनल लोकेशन है आई थिंक गेम की, एज़ फार एज आई नो। और भी कुछ हो सकता है आगे, मुझे नहीं पता। बट एज सुन एज मैं यहाँ पे आया एंड देन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ वेरी बिग होटल
एंड हम बोट से आए थे यहाँ पे एंड दिस इज़ सपोज टू बी द होटल जहाँ पर कि मैरी और जेम्स दोनों आए थे व्हेन मैरी वाज हेल्दियर. So this is a very special hotel according to both of them. This hotel was special to both of them, and somehow we have like again end up here. So let's see कि यहाँ पे क्या है. What is even calling us here? मुझे नहीं पता है. देखते हैं. कल की पूरी देखी थी. Miss a little bit of the late night lore. Okay. So अभी कुछ नहीं किया मैंने. We were in the garden और garden से just हम यहाँ पे आए थे inside from the main door, and I don't think I did anything here except like checked out a couple of doors. That's it और कुछ नहीं. And then there's this I don't know क्या there's a musical box यहाँ पे. इसमें कुछ लगाना है. I'm not sure what that is. And then बस यहाँ पे save किया था game and then उसके आगे कुछ नहीं किया. But then we found a note here. It says Mr. James Sunderland जो कि हमारा नाम है. Regarding the videotape you left in your room during your last stay, I'm glad to inform you that we have recovered the item and moved it to the employee section on the first floor. The tape is stored within the hotel, safe to be returned to you at your earliest convenience. After yesterday's stream, I don't know if this is really the end. पता लगेगा आज बोट राइड के बाद तो ये लगा कि it's going to end. Yes, game is ready to prove I think everybody wrong here. Probably, I think so. ज़्यादा गार्डन में मत घूमो. रोहित शर्मा मारेगा वो है. Okay. ठीक है. So we have a key here, which is the key to the music box. Room 312 key and ornamental key दोनों एक साथ हैं इधर. Alright. Lock. Okay, we need 3 of these items to actually help rotate this puzzle into place. अभी अपने पास नहीं है. So this is what we are looking for. जैसे prison में नीचे हम वो ढूंढ रहे थे scale weights, तो यहाँ पर we are looking for these 3 items जो यहाँ पे लगेगी. Probably like switches or something that rotates it. James recorded one of those happy videos we see in American movies and then something bad happened to the wife. Classic. Rish in his own form always like thinking like a chartered accountant and trying to analyze the situation and miserably fails every single time. Logged. Oh, we found another key. 102. टेप में क्या रिकॉर्ड किया था? कुड बी लाइक देयर हैप्पी मोमेंट्स. जहाँ तक मुझे पता है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर दे शेयर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स. जहाँ तक मुझे पता है. वाइट इज रोस्टिंग दिस हैंडसम गाय रिश एज ऑलवेज. खुद का हैंडसम बोल रहा है. ठीक है. व्हाट इज दिस? कांट गेट इट आउट ऑफ माई हेड. Remember that strange book you found earlier? Some very odd-looking man came in a few hours back, claimed it belonged to him. Honestly, I didn't feel like arguing. I wanted to be through with him as soon as I could, so I gave it to him. I'm not sure how he even knew it was here. I don't think he was ever a guest here. I would have remembered. Lost and found note. Actually, I have a lot of theories जो
एक बार गेम खत्म हुए then we'll discuss. I have a lot of theories. तो घूम के उधर ही आ गए वापस on the front side, or should I say the back side? I don't know. Somehow after that I could not see myself in my reflection. Is there a note? नहीं, lol. I thought it was a note. Note देखने की आदत पड़ गई. Elevator is out of service. Damn. Is that a piano I hear? Intermezzo Op 118 number 2 by Johannes Brahms. Holy. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh, What? yeah. Want to read it? Wait, Just she got a letter? Don't How? tell Rachel, okay? Acha, Who's Rachel. Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. Oh, now it makes sense. My Now dearest Laura, it makes sense. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. This is Mary's voice. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. 8th birthday. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the
quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, there kind of was this other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! So, किसकी theory थी कि Laura is a bad or evil girl? I think we can safely say she's not. Wow. Wait 1 second. So in this drawing जो वो पहले भी draw कर रही थी, that small rabbit is supposed to be Laura. There was a bigger rabbit which was supposed to be Mary. And then there was this dog which she thought was evil. But now he's friendly. That means it's James. As far as I know, जो मेरी theory बोल रही है, Laura was in the hospital, in the same hospital as Mary, and she was also getting treatment there. That's why they both know Nurse Rachel. And before Mary died, she left a letter to Laura with Rachel, which we are now just realizing. Now James have a lot of questions in his mind. And you know what? I love how his expression is now changing. Like he's even more confused than before. And then आप देखोगे his eyes are becoming more tired and more red, and I don't know, his whole demeanor is completely changing. He's confused though, for God's sake. I'm so confused. Someone nichoding my brain. आज लेट क्यों हो गया? Personal information. Laura!
Where is she? Was she here? Well, that's not funny. Note to the staff, be sure to clean up the fireplace in the conference room. Well, there was only one room in the basement, or what? This thing is logged. Alright, what did we have? We have some key items. 102 की चाबी है अपने पास और 312 की है. I don't think there's anything else in the on the ground floor. Let's just go up. I feel like I've seen this somewhere. Wait, so ये तो सेकंड है. 108 किधर है? लॉबी से उस तरफ. बट एक मिनट, was that door open? I don't want to skip the whole ground floor, man. Oh, it was open. Okay. Oh, what? We have things here. In loving memory of Sean Mitchell, the family regret to inform you of his passing. The funeral service will be held at the St. Stella Church in South Vale intersection of Nathan Avenue and Neely Street at 11 a.m. Following the service, we'll hold a small reception at Sean's family home. Sean Mitchell. Nope, name doesn't ring a bell. Isn't that Laura's?
गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कप्तान भाई ने फिगर आउट कर लिया स्टोरी। क्यों कप्तान भाई? नहीं, मुझे तो लग रहा है। वेट, क्या मैं उधर से क्रॉल करके वापस आ गया? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ क्रॉलिंग देन? Back to the front. Wait, why is smoking not allowed here? Sunrise wing key. Could be at the top. I guess we checked out every room on this floor. Yeah, except the employee section. अरे shit, करेंगे थोड़ी देर से. So like final thought, there is something wrong with James. Isn't that obvious? ये साइड तो देख लेता ना मैं ना. I don't want to miss anything. Wait, 107 में नहीं गए हम. Yeah, the end of the room. हेलो यूजी. चिंतन 107. हाँ वही देख रहा था. मैंने कहा कुछ एक रह गया है. तेरी तो तेरे को तो हाथ से मारूंगा. रुक इधर आ.
ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, गेम हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग मैनी टाइम्स. मेरे को नहीं लगा था कल रात के स्टफ के बाद भी बचा है गेम दैट लुक प्रीटी क्लाइमैक्सी. Yeah, but there's a whole hotel left. Oh, this is locked. We need a key for this. Please clean up the room. I just fucking killed you multiple times. Hello? What? Has anyone seen Shutter Island? I did multiple times. The hell is wrong with this thing? It doesn't want to die. रिलेटेबल लग रहा है? नहीं, not that much. I mean a little bit, but we should save. Sunrise window, second floor, ये third floor. कल अपना एक बंदा है आदित्य, नॉट दिस आदित्य जो चैट में है, या अ डिफरेंट वन, ही प्लेज एपेक्स. उसने गेम ख़त्म किया. मैंने उससे पूछा, वो बोले कि गेम में कोई हिंट्स ही नहीं मिलती. मैंने कहा ऐसा कैसे? आई गेट एवरी हिंट फ्रॉम द मैप. 202. Oh, I thought there was something inside that. A ripe apple.
भूख लग रही? मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट कॉन्फिडेंशियल MSS। आगे क्या? It could be Mary's record. Mary Sunderland. डमी कर्टन से बाहर देख रही है आप? For anyone who doesn't want jump scare, try to watch stream in a little low volume. Want jump scare? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देखो. This is something from the original game. I can't relate to it yet. We have the key to one of the rooms, right? 202. Where is it?
It's on the other side. Of course it is on the other side. But we can go there actually now. Stalwart to the end. I thought it was related something to that prison thing. No. Looks like a gladiatorial fight. The one who soared, Alice Burroughs. Collecting books now. Revelations, a new understanding. Must be some sort of puzzle for this. Pride before the fall. Allah. Really? I think this is related to the painting somehow. Is it? वही सिंबल ही देख रहा हूँ मैं. This guy has wings.
वही तो किया था मैंने. उल्टा है वो इमेज उल्टी है यहाँ पे, क्योंकि वो जो स्पीयर है वो इसमें ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्पीयर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. दैट मीन्स जो इमेज है वो रिवर्स्ड है. इट्स अपसाइड डाउन. This room is dark. $217. There's blood on the floor. हेल्प लिखा हुआ है. I don't know about that. We need a bulb for this. I think I saw a bulb somewhere. नीचे जो गार्डन में जो एक वो था उस पे लगा हुआ था. I don't know the code to this. I don't want to mess it up right now. Let's check out other rooms first. Interesting puzzle, eh? कौन सा रूम है ये? 206.
Do you guys realize जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं चीज़ें और ख़राब दिखने लग रही हैं? It's a weird room. Mirror, mirror on the wall, who's the sweetest of them all? Peel away the shiny skin, see the rotting flesh within. What? Oh. ये क्या है? वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा नीचे वाला? ग्राउंड पे एक ग्लास पड़ा, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा या फिर है ही नहीं? Oh, it wasn't here. So we need a piece of glass. What the hell? Is there a room on the other side? Oh. Ah, Snow White figurine. It's like... Okay, यही तो वो नीचे लगना है शायद, in that machine. कांच पे से चुड़ैल आके काट लेगी. What kind of sorcery is this?
I think यहाँ का तो काम हो गया. We went into 204, right? I think we did. We got the figurine. हॉल के उस तरफ नहीं गए हम 208 और वो सब. Suddenly it's like starting to get really dark and black and weird. ये क्या है? Silent Hill flower deliveries, perfect flower for perfect occasions. Somebody's inside that. I like how James get exasperated जैसे उसको कोई लॉक डोर मिलता है. He's like, damn it. Wait, is there a backside to these rooms? Yeah, I hate him too. Game is back to normal, yeah. Alright, और क्या बचा है इस फ्लोर पे? What else is there? Cloakroom, hall. $208 में, wait, can we go there from the back side of these rooms? You can see that it's like इनमें से कोई खुला है क्या? No, I think सबकी gallery बंद है. You can't get there. So 208, that means you're like permanently बंद है probably. Alright, go someplace else then. Before we go, I don't think इस रूम में और कुछ है. We went into this one, right? This was the medical one. हाँ. There are stairs there, but वो बंद थे, I think. 214 is locked, and there should be key to that door. जिसके पीछे एक save दिया हुआ है वहाँ पे. We don't have the key for that.
That must be important. Alright, let's go back down then. Oh, we saw that. See? I told you. It's getting worse. अभी तो रुको, आपके रातों की नींद उड़ेगी, पता मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन डराने का मजा। ओके वो जब तक तीनों प्लेस नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं. दैट्स द थिंग. ऑलराइट. वेट, गिफ्ट शॉप में नहीं गए थे क्या हम? वाज इट? अच्छा वो बंद थी गिफ्ट शॉप. ओके. ऑलराइट, लेट्स गो टू द थर्ड फ्लोर क्योंकि और कुछ नहीं है यहाँ. When did this happen? Holy shit. ये वाली stairs बंद है. There's one more stair set on the other side. मैं पढ़ रहा हूँ गाइज मैसेज सबके, बस वो लाउड नहीं पढ़ता. और ये मत समझना कि नहीं पढ़ रहा. आई रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. Big room. What is this? Is this the conference room? यही आना था. Looks like a projector. Fireplace. Oh, there's a statue inside that. We need a key to this. Note to staff: since it's taking you this long to get to the conference room, you might as well drop by room 107. I'm leaving you the key. One of the guests has made it quite a mess. Okay. 107 की key मिली. Alright, let's get to 107. Oh, 107 तो एकदम नीचे था.
While you're at it, be sure to sweep up the leaves out in the garden. Then you can get back to the fireplace. I killed you. How come you're not dead? What the fuck? Fireplace key. Cinderella figurine. Why did he turn like that?
God damn it. Oh, what? Red paint. Is this paint or blood? Oh, we're at the back side of that. Oh. पर अपने पास की 312 की भी है. Logged. This is concerning. There's a book right there. ऐसा लग रहा है किसी ने फेंकी ऊपर से. I can't go there. What is that? आवाज आ रही है पर दिख कुछ नहीं रहा है किसी भी केज में.
so weird. ग्रास को शूट करने से एमो नीचे गिरेगा. कौन सी एमो? You mean that book? Yeah, why I haven't thought of that? We can try. Man, you guys are geniuses. Game lag क्यों कर रहा है मेरा? I think it's loading new areas somehow. चीज़ें change हो रही हैं background में, इसीलिए lag हो रहा है. Yeah, it looked like a book to me. जैसे ऊपर से किसी ने फेंकी हो. Okay, we are back here. You should go back up. वैसे एक मिला है अपने को ना वो. तो इसको लगा दूं क्या नीचे जाके, या फिर पहले ऊपर देखते हैं. कॉन्फ्रेंस रूम का तो काम हो गया ना, तो वो बंद ही हो गया वो रूम. पेंटिंग रूम है, ये लॉग्ड है. $312 इधर होगा आगे. नहीं, it might be on the other side. Yeah. Don't have the key to this. बोलो जुबा केसरी. Holy fuck. साला ओपनली मोलेस्ट करते हैं वे. Bolt cutters. Useful for cutting through chains. I guess ये पूरा section इधर locked है अभी. Wait, there was a padlock there? Padlock we can open? Possibly. नहीं? Padlock नहीं खुलता इससे? Okay.
वही तो ज़्यादा झप्पियाँ देते हैं इसमें के लोग. Where do you think that bolt cutter thing would be useful? Anyway, let's go down into the lobby first. What does he keep looking at? जब भी यहाँ आता है. He's looking outside. Okay. One more figure is missing. Alright, so main thing, वो जो रूम था जिसके ऊपर से वो टपका था, अच्छा रेस्टोरेंट में है, मतलब वो नीचे रेस्टोरेंट में गिरी है वो बुक जो भी है ना. So there is nothing on this side. Let's check out the restaurant on that side क्योंकि बुक गिरी थी नीचे. हेलो अक्की, मुंह पे कौन स्पॉन होता है, यही तो दिक्कत है. Oh what? A can opener? Hmm. Hmm. So we have a can opener, a bolt cutter, some paint. Maybe this should be combined. Yeah, open paint can. Open can full of red paint. क्या करूँ, नहा लूँ इससे? I think I should go back into the garden because there are a couple of things जो वहाँ पे रुकी थी. Wait, why can't I go into the garden now? Garden side है ही नहीं. That's the other side actually. I think garden side. Yep. मेरे को याद था कि there was a lock here जिसमें चेन लगी हुई थी. हाँ ये देखो, इसमें बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे. This is what we needed. ये उधर से दिख रहा था हमको, याद है? Large one of the west, tempted by the lure's appeal, failed to resist it. Okay. Laganturia. Are we ending today? Let's see if we do. बहुत देर से सेव नहीं किया. Alright, so what do we have? We have a bulb. It appears intact. We have a paint can. 212 की चाबी है अपने पास, है ना? So where was the bulb? कौन से रूम में था बल्ब? There's a weird room, right? कोई एक थर्ड फ्लोर पे था. B312 में लिखा है waiting for you. Damn, I can't even go there.
इसने कहीं मार्क भी नहीं किया है। ये किया है मुझे दिख नहीं रहा। वैनिटी मिरर, हाँ वो है 205 में, वैनिटी मिरर 205 में। यस दैट्स इट, या दैट्स इट। But it's not on this side, right? It's on that side. What does he keep looking at? See? दो सौ पाँच किधर है भाई? अच्छा, क्रॉल करके गए थे क्या इसमें? अच्छा, रीडिंग रूम से, ओके, रीडिंग रूम से क्रॉल करके गए थे उधर। ओके ओके, अब समझा मैं। You need to paint this red. Deed done. That could be the code for this. Employee elevator. कितने सेव पॉइंट? एक ही फ्लोर पे दो दो क्यों दे रखे? ओह अच्छा, there's an elevator इसलिए। ये क्या है? Oh, you can store items here.
Wait. What? Huh? It's not gonna allow till we store everything we have. Do we have any other lead? वही है एक 212 की जो key मिली थी, only that is the lead that we have, but I think this might be the only way. Huh? There's only one floor it goes. I have nothing and you're... Oh my god. Wow. Employee should report for duty on time. क्या? Okay, employee section का map है ये. Of course, you need a code for this. Blue gemstone. चलो 7 for flower delivery. वो तो फोन नंबर लिखा था ना वो तो.
Bread. दो ही रूम बचे हैं, एक लॉन्ड्री वाला और एक मैनेजर्स ऑफिस. Nothing works. It just won't wash off. It just won't wash off. Order new sheets. Don't see anything useful. Literally, I don't. Okay, we need stuff for this. Oh. Means we need multiple then. At least एक और होगा शायद. Can you even fight bare hand? Nope, you can't. मेरे से एक लड़की ने पूछा था बीच गाय और माउंटेन गाय. मैंने माउंटेन बोल दिया, मेरी फट रही है और उसको ट्रैकिंग करनी है. तो फट क्यों रही है उसमें? इट कुड बी फन. बेडरूम गाय. वो उसी टाइम जूते पड़ते हैं उसको, है ना कप्तान भाई? बच्चे को जूते पड़वाओ तुम. Have you seen this sign somewhere? Oh, it's this one. Got it.
ये हाईलाइट नहीं हो रहा, वो मतलब ठीक से दिखाता नहीं है कि इट्स गेटिंग हाईलाइटेड. इट्स अ बिट वियर्ड. Sort of a weird puzzle, isn't it? अरे 7414. Oh, we got the videotape and the basement key. Is it behind me? फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. Oh fuck. That's not good. That's not good. I hate that clicking sound. I could stay here. We need a wheel for this. And a key for this. Fuck. Driving sim set. What is that? The boiler room? Oh, we got the bar key.
हो सकता है वही की हो, क्योंकि बेसमेंट में ही था बार, मतलब वीनस बार, सो हो सकता है उसका बैकडोर की हो. Yep. Wait, we need the wheel again? Oh, it's flooded. The aquarium behind this is now okay. Alright, we got the third figurine. Different types of lures. Somebody won the trophy. Oh, that's ironic, isn't it? Should we get our stuff back first? क्या बोलते हो guys? I don't even have a map. बैडी सर में क्या बोल रहा Alright, we got our stuff back. ग्यारह के बाद कब फ्री हो? 11 तारीख? For what purpose? For some unfinished business. यार देख रिच, जो तू टाइम बोलता है ना उस पर मैं नहीं कर सकता यार. दोपहर का टाइम नहीं हो सकता, वो इवनिंग का ही हो सकता है या लेट इवनिंग ही हो सकता है. दैट्स द इशू. And there are 2 lines into this. सेंटर वाला इंडिपेंडेंटली घूम रहा है.
kind of weird. Hmm. What began with 3, one would soon deplore. 7 kindly souls open the door. Huh? Trading 1 for 2. Always she would roam, but the love of 5 would bring her back home. किसी को समझ में आ रहा है? स्टफ वापस लेने के लिए एनिमेशन क्यों चलाया? क्योंकि वो उसके बाद क्लोज हो गया, आप दोबारा नहीं जा सकते. इवनिंग कर लेते हैं. मैं तो दोपहर इसलिए बोला क्योंकि लास्ट टाइम दोपहर था. ओके, इवनिंग आफ्टर 4 ना, लेट आफ्टर लाइक 7 8 और समथिंग. बट यहाँ पे की रोटेशन का दिया हुआ है विच आई डोंट अंडरस्टैंड. भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. What began with 3, one would soon deplore. 7 kindly souls open the door. Trading 1 for 2, always she would roam, but the love of 5 would bring her back home. Haunted by the 2, she would toil away, leaving 1 behind. She's found a way.
आई थिंक ये जैसे चाबी भरते ना, इट्स समवट लाइक दैट बट इट नीड्स टू बी दैट. So this one right here is for Snow White. Trading 1 for 2, always she would roam, but the love of 5 would bring her back home. First one is 7, that much I know, because then it actually वो सीधे घुस जाती है वहाँ अंदर. See? That means वो वाला correct है. I'm not getting the second one though. Trading 1 for 2, always she would roam, but the love of 5 would bring her back home. But then बाकी के मूव क्यों नहीं करते? अच्छा, उसको चलाने से पहले आपको सबको एक साथ की करना है, तब चलेगा वो. सो दिस इज 7, दिस इज 5. ये नहीं समझ आ रहा है मुझे. I don't know this third one. Haunted by the 2, she would toil away, leaving one behind. She has found a way. पर मैंने 1 ट्राई किया था पहले, हुआ क्यों नहीं उस टाइम? अच्छा, बाकी के नहीं हुए थे कंप्लीट इसलिए. समय भरनी है, चाबी रीसेट हो जाता, सबको एक साथ नहीं घुमा सकते. हेलो स्पॉइल, क्या हाल है? थर्ड में 1 होगा, देख लिया मैंने. 1 होना चाहिए फॉर थर्ड. 2 - 1. हाँ, पहले भी 1 रखा था मैंने, पर वो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि द अदर्स वर नॉट करेक्ट. एनीवेज, अपने को क्या मिला है? 3rd फ्लोर कॉरिडोर की. ओह, वी गॉट द 3rd फ्लोर की. स्पॉइल, थैंक यू फॉर द मेंबरशिप. भाई धीरे धीरे होटल पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. नहीं, इधर जान. I think it's the padlock key या फिर हाँ, it is the padlock key. Alright, now we are finally on to the rest of the 3rd floor. ये 212 है? नहीं ना, इसके आगे वाला है. ये तो ऑब्जर्वेशन रूम है. Cleaning in progress. Oh, we are finally here. Truly special. Reach room 312. What is that achievement? सिर्फ रूम में पहुंचने का achievement?
Oh, there's a cassette player here. Okay. Let's go. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James? Oh shit. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick? I killed her. Kill her? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. It's complicated, guys. We'll discuss it at the end in detail. James! Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me.
Where? Where are you? You're so close now. Please, don't give up. Don't leave me out here, James! James! सारे सवालों का जवाब मिलेगा।
She will not be cured. All that suffering. I am no longer sure if it was of any use. If it meant anything at all. I can't say if this newfound understanding, if there's any wisdom to be had in all that happened. I suppose that's for you to learn. And I hope you will. There's nothing in the envelope. Where's the letter then? बंद है तो यहाँ नहीं आना था क्या? क्योंकि वो सेकंड फ्लोर का भी ऑप्शन दे रहा था जाने का, लेकिन मैं बेसमेंट में चला गया. But now the elevator is stuck.
Alright, why didn't I see this? Mama? Mama! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? Did she just say, did For me, you it's see it always too? like this.
James! Leave her alone. Leave us both the hell alone. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Destroy what you don't need.
What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Mary? I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James. Honey. What's wrong? I'm sorry. I know you tried, James, please. but she's gone. I know that now, Stop it. and I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go.
No. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't!
James. James. Mary. Hey, handsome. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James.
I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. कॉम्बैट चैलेंज स्टैंडर्ड प्रेजेंट चैलेंज स्टैंडर्ड एंडिंग लीव वाली एंडिंग मिली अपने को एंडिंग क्लियर 1 out of 8 देयर आर 8 डिफरेंट एंडिंग्स टू दिस व्हाट are you serious right now? Distance traveled 51 kilometers, consumable picked up 409, notes picked up 58. Number of times tried to open locked doors 387, number of times checked the map 681. ये तो नहीं बताया how many times I died. Total enemies killed 401, enemies killed by shooting, by fighting, total damage you receive, favorite weapon steel pipe, number of windows destroyed, number of healing item used, times died 0. You've gained access to New Game Plus where you can play with access to additional items, graphic modes and endings. Hello DG. That would be humiliating. What would be? Dying in this game?
Why? Yes, apparently there are like multiple endings to this. All in all, जो boss fight होती है, it's the same, but after that जो outcome होता है, it changes depending on what you have done throughout the game. I know about the leave ending, जिसमें you just leave Silent Hill and forget everything, just leave everything behind. Leave is supposed to be the happy ending. There is one more ending जो मैंने सुना है सिर्फ, I don't know much about it. It's called In the Water, where James goes like drives into the water and kills himself. Like he just doesn't want to cope up with what he did. And maybe there are like multiple, like maybe a couple of them more, I don't really know. But all in all, बस ये होता है कि after that what happens to James, what he accepts, वो चीज़ होती है. That's it. Yeah, I read your messages. Why are we here then? Oh, it's continuing somehow. Okay, let's go to the main menu. I didn't make a save after that. New game plus यहाँ पर आता है. Okay. Additional items, graphic modes and endings. You change the graphic mode. 90s, pixelated, black and white, VHS, CRT, outline plus posterize. Stream is pausing for me after a few minutes. That's your thing. I'll show you one thing which I know. I'm gonna skip this. पहला सीन तो आप लोगों को पता ही है, where it actually starts. Then we can, you know, do some deep dive into this. This is the first scene जहाँ पे James is actually looking into his own reflection in the mirror. Now मैंने graphic mode change किया है just to show you one thing. But we can look at it after we do this. Alright, so I have a few thoughts. मैंने कुछ points बनाए थे after this, which I have written into a notepad somewhere. Let me find that. So we can, like, you know, discuss this. करना है discuss कि नहीं? How many people are interested? पहले ये बताओ. Then we can go into that. I mean, सबके इंटरप्रिटेशंस हैं, तो कुछ मेरे भी हैं एंड कुछ चीज़ें मैंने भी सोची हैं which I think could be fun to talk about. Alright, so let me open my notes and we'll have to create something new for this. एक second. Alright. I'm gonna exit the game ताकि थोड़ा GPU से load मेरा हट जाए. I'll check this out later. Alright.
Alright, so I have some questions in my mind जो काफ़ी टाइम से हैं, and since this is I'm playing this game again for like after 23 years, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं जो मुझे लगा था कि it might not be what it could be, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि they are very different. First thing, the town itself. What do you think of the town? अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? What we're gonna do is we're gonna make some connections and see what works and what not. So this image right here, ठीक है, this will represent क्या बोलते हैं, the town, ठीक है. Alright, let's see what are the main characters. James Sunderland. This is the main character. तो क्या होता है when we discuss the story या फिर something, we only look at only one character or two characters जो हमारे सामने होते हैं, but we actually forget about the other characters जो बहुत ज़्यादा important होते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा important होते हैं. So in that sense, we have Angela and we have Eddie. Eddie क्यों था story में? That's actually one of the questions that I have. But I think उसका भी एक solution है. And Laura. Oh my god, that's a big ass image. अगर कोई मेरे लिए चैट लिख रहा है तो प्लीज़ मुझे टैग करना, नहीं तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. Aki, what's up? It's a huge area to explore with a very uncertain spawns. Spawns? What spawns? What are you talking about? मैं पागल हो चुका हूँ. उस पागल को अनपागल करने के लिए ही कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी ना कप्तान भाई. इतने बड़े बुजुर्ग हो यार, आप कैसी बात करते हो? What else? और क्या मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे?
What else are we missing? Rahul को reply था. अच्छा. ID seems useless. Maybe in a different ending he makes sense. I don't think any single character was useless in this. Alright. I'm gonna save this as SH2, that's it. That'll be fine. Alright. Let's start with the town first. What do you guys think of the Silent Hill? पहली चीज़ तो as far as I know, जो मैंने notes बनाए थे उसके हिसाब से, there are a couple of keywords जो मैं सोच रहा हूँ which we can relate to all these things, है ना? Relate कर सकते हैं. The four-legged lover who gave you पपियाँ, doesn't matter. It just considered an antagonist. That's it. पहली बात तो साइलेंट हिल इज़ अ वेरी रियल प्लेस, ये ध्यान रखना. इट्स नॉट फिक्शनल. इट्स नॉट फिक्शनल as opposed to what you guys might be thinking. Silent Hill is not fictional. It's a real place. Even in game के जो सेंस में उसको बताया है. एक काम करते हैं, रुको पहले जस्ट थोड़ा लेयर क्लीन अप कर लूँगा, नहीं तो मेरे को मूव करने में बहुत दिक्कत आएगी. जस्ट 2 seconds. Alright, cool. Let's just move them down for a bit. Let's think of some keywords. Real place. Silent Hill real place है because we know कि sometime back. Now before you guys make your own theories, let me just put my points in first. ठीक है, just listen to me. पहली बात तो ये real place है. We know this because sometime back, we don't know what time, James और मैरी यहाँ पे दोनों आए थे and this was supposed to be their happy place. ये वो टाइम था when they were actually happy and कहीं ना कहीं मैरी की और जेम्स की दोनों की मेमोरी में था, ये जगह थी, कहीं ना कहीं घर कर गई थी because they had, उनका इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया था and then they had very very strong emotions towards this place, both James and Mary. इसलिए वो मैरी उसको बोलती रही कि तुम मुझे वहाँ ले जाने वाले थे दोबारा but you never did. ठीक है, so considering that, yes, it's a real place. Now Silent Hill as a town, deep, let's say deep and disturbing history. There's a very deep and very disturbing history to Silent Hill जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं because when you're playing a game you don't focus on these things, but yes, Silent Hill has a very deep and disturbing history. First of all, when you go into the historical society, जो historical society में जब आप जाते हो, almost at the when before you enter the underground prison, तो you remember कि there is a museum and उस museum में there are lots of photographs and throughout the game हमको बहुत सारे ऐसे incidents और बहुत सारे letters, newspapers, clippings और सब देखने मिला कि this town has a very old history of you can say
weird things. You can say it is known for witchcraft, it is known for cults, it is known for क्या बोलते हैं उसको, executions, it is known for cultists, and it is known for like messing with your mind of like there is something disturbing here of psychological nature. That is the main thing. ये जानना ज़रूरी है before we delve into the other characters. ठीक है? Now this, yeah, you can say all the occult things. और मेरे notes में है भले इस टाउन को आप देखते हो एज अ लाइक अदरवर्ल्डली प्लेस, लाइक आपको लगेगा कि इट इज़ इन द इमेजिनेशन, बट ऐसा नहीं है. द टाउन इज़ एक्चुअली वेरी रियल. इट्स अ प्लेस दैट यू विजिट, बट बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ इट्स सुपर नेचुरल नेचर, कहीं ना कहीं इट मैसेज विद योर माइंड. This is very important to know. Very, very important to know because it messes with your mind. And जो भी इस टाउन को विजिट करता है कहीं ना कहीं yeah, horrific murders also. Yeah, that's true. That's true. That's actually very true. जो भी इस टाउन को विजिट करता है ना कहीं उसका एक डीप सीटेड फियर बाहर आ जाता है. Yeah, I should say a proper word would be guilt, fear, resentment. जो भी होता है वो बाहर आ जाता है वहाँ पे. So let's just say it doesn't mess with the your like जो भी आपका psyche होता है, it plays with your psyche. ऐसा मुझे लगता है. Because this town has a history of it. Because it's a real place. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इट प्लेज विद योर माइंड एंड देन इट अलाउज यू टू कन्फ्रंट योर डीप इमोशंस. बहुत डीप इमोशंस को कन्फ्रंट करने की वो जगह है. बिकॉज जितने भी कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई यू, ये सब रियल पीपल है. ठीक है, all of these three are real people. Maria is not, as we already know. Pyramid Head, not real. All the other things, not real. Any thoughts? Who should we talk about first? Let's talk about Maria first, है ना? Now, what are the keywords for Maria? How do we define this character? What about dual buildings? Are both real or one real or imaginary? Dual building, अच्छा, that thing I'll get to that because it's not easy to explain. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मरिया जो है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, मरिया क्या रिप्रेजेंट करती है ये मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट थिंग इज डिज़ायर. सेकंड, इट्स गिल्ट. एंड थर्ड,
पहली बात तो मरिया रियल नहीं है, ठीक है, शी इज़ अ बेसिकली शी इज़ नॉट अ रियल पर्सन। तो ये एक्चुअली है क्या? इट्स जस्ट मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखी कहीं पे, कहीं ना कहीं। अगर थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाए तो इग्नोर कर देना। पहली बात तो मरिया वॉज नॉट रियल, ठीक है, शी वॉज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ मैरी एंड वो सिर्फ एंड सिर्फ जेम्स को ही दिखती थी। थ्रू आउट द गेम वी हैव नेवर सीन एनी नॉट ए सिंगल इंटरेक्शन बिटवीन मरिया एंड एनी अदर कैरेक्टर एवर एक्सेप्ट हु these things, only these things. अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? इट्स ऑब्वियस, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रियल। ये जो तीनों चीजें हैं दे आर डीप सीटेड इनसाइड जेम्स माइंड only इसलिए ये जितने भी क्रीचर्स हैं या जो भी हैं, इंक्लूडिंग जब हम बात करते हैं पिरामिड हेड की, वी टॉक अबाउट दीज मॉन्स्टर्स, ये किसी को नहीं दिखते हैं, ये किसी को नहीं दिखते हैं, इनका और किसी के से इंटरेक्शन नहीं होता है कभी। नन ऑफ देम, आपने पूरे गेम में कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दीज मॉन्स्टर्स आर अटैकिंग आइदर एंजेला, एडी और लॉरा। किसी को भी नहीं अटैक किया उन्होंने, कभी भी नहीं। लेट्स जस्ट आल्सो राइट देयर नेम्स। कोई भी सीन नहीं था कहीं पर भी। दैट इज बिकॉज साइलेंट हिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं रुका हुआ था सो दैट आई कैन रीच अप टू दिस पॉइंट टू डिस्क्राइब कि व्हाट इट इज। मैंने एक्चुअली वो वर्ड स्पेसिफिकली लिखा था कहीं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। साइलेंट हिल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करता है आपके साथ, इट्स अ पर्सनलाइज पर्गेटरी एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन। अब पर्गेटरी मतलब क्या होता है? मान लो योर पर्सनल फॉर्म ऑफ हेल। जब भी यहाँ पर कोई पर्सन आता है ना इस टाउन में, तो वो हमेशा उसके जो डीप इमोशंस होते हैं, भले वो कुछ भी हो, लाइक गिल्ट हो, रिग्रेट हो, फियर हो, ये सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं एंड टाउन उस चीज़ को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, उसको पर्सोनिफाई कर देता है। इट मेक्स यू कन्फ्रंट योर वेरी डीप इमोशंस एंड इट प्लेज विद दोज इमोशंस जब तक कि आप या तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो या फिर आप उस हार के उससे गिव अप नहीं कर देते हो। अल्टीमेटली दोनों में से एक ही चीज़ होती है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आप गिव अप कर जाओगे, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। सो इट प्लेज विद योर माइंड, दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सनलाइज पर्गेटरी, दैट मीन्स इट्स अ पर्सनल हेल। इसलिए क्या होता है कि इन दिस वर्जन आप जेम्स को सिर्फ यही कैरेक्टर्स दिखते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ हिज पर्सनलाइज हेल। एंजेला को ये कभी नहीं दिखते हैं, एडी को कभी नहीं दिखते हैं, लॉरा को कभी भी नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे मरिया की जो बात हो रही है, वाई इज शी हियर, द मेन रीजन इज शी इज मैरीज इन्फेस्टेशन ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स, जो किसको हो रही हैं? जेम्स को। दीज आर नॉट मैरीज फीलिंग, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर जेम्स फीलिंग्स। मतलब पहली चीज तो मैरी जेम्स की जो वाइफ थी, शी वॉज इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग बट शी वॉज इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपेरेंटली बहुत सारे हॉस्पिटल्स विजिट करने पड़ते थे उन लोगों को। जेम्स हैज स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम
in hospitals because his wife was sick, ठीक है. And at some point कहीं ना कहीं इतना time निकल गया था इस चीज़ों में कि he started resenting Mary for actually getting sick. Now because he had a certain image of Mary in his mind, तो कहीं ना कहीं कहते ना कि मे बी ही इज़ यंग और वट एवर, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर उसके अंदर फिलअप होने लग गया था. एंड ही स्टार्टेड लुकिंग एट नर्सेज विद दिस. तो जो भी नर्सेज दिखती है ना, वाई आर दे सो सेक्शुअलाइज्ड? कभी सोचा आपने वाई आर दे सो सेक्शुअलाइज्ड? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज वांट टू सी इट. Angela was bipolar but aware of trauma and depression. We'll get to that. Angela, Eddie, Laura also experiencing their own hell in the town just like James. Exactly. That's what I'm trying to tell you guys. जेम्स को सबसे पहले जब वो हॉस्पिटल्स में था तो उसको क्या होता था? बिकॉज हिज वाइफ वॉज ऑन द बेड फॉर क्वाइट सम टाइम. ही हैड फीलिंग्स ऑफ डिज़ायर. अब डिज़ायर मतलब सेक्शुअल डिज़ायर ऑब्वियसली while he was looking at these nurses and all that, because it's like he was surrounded by them and उसकी वाइफ बेड पे थी. he spent so much time looking after her but she was not getting better. ठीक है. सेकेंड थिंग, भले ही वो डिज़ायर उसके मन में था but he was in love with Mary. वो चाहता था कि वो ठीक हो जाए. So he knew that this desire was wrong. That actually filled him with guilt. That's part of the guilt. Another guilt जो कि लास्ट में हमको पता ही चल गया था यहाँ पे, he murdered his own wife. उसने खुद ही एडमिट किया he murdered his own wife. तो उसको गिल्ट भी था कि जो मैंने किया है, जो मेरे सिन हैं, उसको गिल्ट भी था. एंड द थर्ड थिंग इज, मैरी उसको क्यों दिख रही थी इन दैट फॉर्म जिसमें वो इजी गोइंग है, सेक्सी है, शी इज़ लाइक वेरी एडवांस इन अ वे कि वो अफेक्शन जीतना चाहती है उसके. शी इज़ वेरी फ्लर्टेशियस, वेरी सेंशुअल. क्यों? बिकॉज ये उसकी मैरी की इमेज थी. वो चाहता था कि मैरी ऐसी हो, बट सिंस शी वॉज कम्प्लीटली सिक तो वो नहीं हो सकती थी ऐसी. तो उसने एक इमेज बना ली थी अपने दिमाग में. दिस इज वॉट ही वॉज ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड टू. तो द फर्स्ट टाइम जब साइलेंट हिल में जेम्स आया एंड ही वेंट टू दैट स्पेशल प्लेस जो उसमें लिखा हुआ था लेटर में, विच ही डजंट नो व्हाट स्पेशल प्लेस, बिकॉज द होल टाउन वाज स्पेशल. जो पहला डायलॉग है उसने सबसे पहले ये बोला था कि what did she mean by it, because this whole town is special. So he went to the very first place that he knew was special, was the garden जो उनको मिला था, that lake view garden or whatever. And then when he went there, what he saw was Mary right there. And if you remember that scene, जिन्होंने भी स्ट्रीम देखी होगी, वहाँ पे ऐसे बल्ब लटक रहे थे and behind you see the lake, and lake के पीछे there was a light. लेक के पीछे देयर वॉज अ लाइट. इफ यू गाइज आर लिसनिंग तो जस्ट टाइप यस और समथिंग. देयर वॉज अ लाइट, एंड वो जो लाइट पीछे थी वो क्या था? इट वॉज हिज रियलाइजेशन दैट ही एक्चुअली किल्ड मैरी एंड शी इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड एनी मोर. वो उसको बुला रही थी थ्रू दैट लाइट, बट जैसे वो लाइट की तरफ देखने लगता है सामने मैरी आ जाती है एंड शी जस्ट कंप्लीटली टेक्स ओवर हिज होल, क्या बोलते हैं, अटेंशन. वो हमेशा जब भी ऐसा कुछ उसके मतलब कुछ होने वाला होता है, दैट ही स्टार्ट्स टू रियलाइज, तो मैरी उसके सामने आ जाती है बिकॉज ही स्टार्ट्स आइडियलाइजिंग. नाउ इस टाइम पे क्या होता है कि साइलेंट हिल इट स्टार्ट्स टू प्ले विद योर साइकी. वो जेम्स के दिमाग के साथ प्ले कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्ले कर रहा है. एंड देन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, जो मुझे इसका समझ में नहीं आया. बेसिकली शी एम्बॉडीज जेम्स गिल्ट, you know, for wishing Mary were a different person. वो चाहता था कि Mary should be a different person. तो उसका जो guilt था ना, that was right there. So Mary was completely idealized, like it's an idealization. ये पूरा manifestation था उसकी wife का. That's why this character was there throughout. Now main चीज़, I need to go, but I'll watch the discussion again tomorrow. चलो ठीक है, as you wish. I wish you would stay, but it's fine. One more thing,
we see that they killed Mary multiple times throughout the game. Now ये मुझे थोड़ा सा weird लगा. Why did James kill Mary? वही तो बता रहा हूँ. Why did they show multiple deaths? मैरी की मल्टीपल डेथ्स क्यों दिखाई उन्होंने? पहली चीज तो एक वो कहता ना इनएस्केपेबल गिल्ट था जेम्स के मन में जो चल रहा था, वो बार बार साइलेंट हिल उसको ट्रॉमेटाइज कर रहा था, बार बार उस चीज़ को दिखा रहा था. पहली चीज़ तो जेम्स जब यहाँ पे आया तो उसको पता नहीं था ये बात. द फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज कि जेम्स के माइंड में क्या चल रहा था, द फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज, बंदे को गिल्ट तो था, बट ही ऑल्सो डिड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. He forgot about one thing. He completely did this. Okay. Multiple death means he wants to kill his guilt. He's not facing his guilt. That's why बार बार Mary उसके सामने आती है. He's not trying to face his thing. पहली चीज तो this is a very important point right here जो मैं बताना चाह रहा हूँ. गिल्ट तो उसको था ही. उस गिल्ट की वजह से उसने क्या किया, उसने ये मेमोरी को कंप्लीटली रिप्रेस कर दिया कि ही किल्ड मैरी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. साइलेंट हिल क्या कर रहा था, उसको बार बार रिमाइंड करवा रहा था अबाउट दिस कि मैरी को भूल जाओ, मैरी को भूल जाओ, एक्सेप्ट मैरी को भूल जाओ, एक्सेप्ट मरिया वो कर लो. लेकिन ही वॉज सो लाइक उसको इतना ज़्यादा गिल्ट था, ही हैड डिज़ायर्स, वो आइडियलाइजेशन भी कर रहा था इसका, बट ही हैड हिज मेमोरी रिप्रेस्ड. उसको पता ही नहीं था कि ही इज द वन हु एक्चुअली किल्ड मरी. दैट्स वाई दिस होल थिंग हैपेंड. जब वो साइलेंट हिल आया तो उसको एक लेटर आया था. लेट मी टेल यू दैट लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट. इट वॉज अ फेक लेटर. कोई लेटर था ही नहीं. देयर वॉज नो लेटर. There was no letter. That was just his made up thing जो बता रहा था कि I have this letter, क्योंकि वो लेटर उसने किसी को दिखाया नहीं, बार बार उसको ख़त्म करने की ट्राई कर रहा है. यस, वो लेटर उसने कभी किसी को दिखाया नहीं, बिकॉज देयर वॉज नो लेटर. वो एक स्टोरी उसने अपने दिमाग में बना ली थी इस चीज़ को कोप करने के लिए, उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए कि ही जस्ट किल्ड हिज वाइफ व्हेनेवर. एंड देन वो सबको यही बता रहा था, जिससे भी उसकी बात हुई वो सबको यही बता रहा था कि शी वॉज डेड 3 years ago. नाउ लेट मी शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. उसके लिए आई हैव टू स्टार्ट द गेम अगेन. Are you guys following? I don't want this to be a lecture. This is just a discussion of what I think it is. I have to change this so that I can show you something very specific. Now this might actually blow your mind. कप्तान भाई का एक सवाल था, जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था. And I realized this very late. Now when this thing starts, ये outlines को mind मत करना, वो जानबूझ के मैंने डाली है so that we can specifically notice something. जब भी किसी पर्सन को ऐसे दिखाते हैं ना, सी he's tense, he's shaking, वो अपने हाथों को देख रहा है. रिगार्डिंग टाइम नहीं, रिगार्डिंग मैरी. एक मिनट.
जब भी कोई ऐसा सीन दिखाते हैं, मूवी में हो, गेम्स में हो, कुछ भी, वेन एवर अ पर्सन इज इन अ डार्क रूम एंड लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन, उसका एक मीनिंग होता है कि ही इज नॉट हु यू थिंक इट इज, ही हैज अनदर पर्सनैलिटी, और देर इज समथिंग अबाउट हिम जो वो नहीं दिखा रहा है, और ही हैज एक्सट्रीम गिल्ट. दैट्स वाई ये सीन यहां से स्टार्ट होता है, व्हेन ही इज लुकिंग इनटू हिमसेल्फ. दिस इज वेयर ही मेड द स्टोरी. राइट एट दिस पॉइंट ही मेड दिस स्टोरी. Could you really be in this town? I'm gonna skip this because we already know this. कप्तान भाई का सवाल था कि can we find Mary's body or her grave? She was here all the time in the back seat. इसलिए मैंने शेडर ऑन किया है गेम के अंदर, सो दैट यू कैन सी द आउटलाइन, बिकॉज अदरवाइज उसको देखना बड़ा मुश्किल होता है. यू हैव टू हैक द गेम टू एक्चुअली सी इट इवन, बिकॉज दिस वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल गेम समहाउ. एंड Mary's body is right here in the car. So when he came to Silent Hill, इसने एक स्टोरी बना ली थी right when he was inside right here, जो इसके दिमाग में इसने सोचा था to suppress his guilt. He repressed this memory कि he has actually killed his wife. एंड वो भूल गया कि उसकी कार के पीछे ही, उसकी कार की बैक सीट पर ही उसकी वाइफ की बॉडी रखी हुई है. बिकॉज ही कम्प्लीटली फॉरगॉट. वी फॉरगॉट बिकॉज वी नेवर इवन न्यू कि ऐसा कुछ होगा. सो व्हाइल ही वाज इनसाइड देयर ही कम्प्लीटली रिप्रेस्ड दैट मेमोरी. और उसने एक स्टोरी बनाई, जिससे भी बात हुई उसने एक स्टोरी बनाई कि माई वाइफ डाइड 3 years ago ऑफ अ डिजीज. शी वॉज इल, but she did not die 3 years ago. She died possibly maybe a couple of days ago. Rarely, like, I don't think it might be a distant possibility, maybe a few hours ago. Let that sink in. I'll be back in 2 minutes. मीठा मीठा.
Okay, I'm back. Game is actually not what we thought. He made up a story thinking he might end up finding his wife, but he just realized in the end she's gone. Yes, जब उसने वो टेप देखा तब उसको रियलाइज़ हुआ. पहली बात तो वो देयर वाज नो टेप, ठीक है. वो गेम ने उसको दिखाया, बिकॉज गेम ने बहुत बार ट्राई किया कि इसको सच्चाई बता सके, बट ईच टाइम जब भी व्हेन ही गॉट क्लोज टू दैट ट्रूथ, तो मरिया उसके सामने आ जाती थी एट दैट पॉइंट, एंड उसको उस ट्रूथ से जितना हो सके दूर ले जाती थी. अरे ये अभी तक पड़ा हुआ है, खराब तो नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा है मम्मी. Did he kill her because she wanted? Because he was tired of the whole medical situation. He was. What he said in the end, वो जो सीन दिखाया था जिसमें मैरी जो थी वो लेटी हुई थी बेड पे, I think that actually happened. क्योंकि लास्ट में इसने लॉरा को एक लेटर दिया था. वो लेटर इसके पास कहाँ से आया? पहले तो था नहीं. जब लॉरा ने पहले पूछा तो वो लेटर नहीं था. बट देन आफ्टर हिज रियलाइजेशन एंडेड, इट गॉट टू अ पॉइंट कि जब उसको सच्चाई अब पता चल गई कि ही इज द वन हु एक्चुअली किल्ड हर, देन ही वाज थ्रू. उसका माइंड एकदम क्लियर हो गया था. देन ही प्रोवाइडेड हर विद द लेटर जो मैरी ने उसको दिया था. नाउ वी डोंट नो द टाइमलाइन इज वेरी up to interpretation कि उसने कब मैरी को मारा था, but you can just see her body right there in the back of the car. Also one more thing, this van right here, ये किसकी वैन है बता सकते हो? Any guesses? Yep, it is Eddie. Now that's why I knew कि Eddie is a real person. He's not a manifestation. He coincides with क्या बोलते हैं, उसके emotion coincide होते हैं with James, but he is a real person. He arrived before James. You can see ये वही जो कप दिख रहा है जिससे वो पी रहा था, वो सेम उसकी कार में रखा हुआ है. So this is Eddie's van right here. So he arrived even before us, and we'll get to that, but he has his own reasons for coming here. But yes, he is a very real person. सबसे important note जो था, what James sees and experiences is unique to him and is shaped by his unresolved guilt and emotional pain over Mary's death. जेम्स को जो भी दिखता है ना, वो सिर्फ उसका ही है, वो और किसी को नहीं दिखता. दैट्स वाई जब एंजेला से उससे कई बार उसकी मुलाकात हुई तो उसने यही बोला था कि दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ, दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ. एक दो बार उसने इसको हिंट दिया, बट एंजेला वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि ऐसा क्या है, बिकॉज she could not see what he is actually seeing. उसके व्यू में एंजेला की व्यू में there was nothing wrong. उसका अपना पर्सनल हेल्थ चल रही थी, जो कि हम ऑलरेडी उसका एक पार्ट देख चुके हैं. सेम एडी के साथ भी हुआ था. एडी कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि when we never saw them fighting any monsters. We never saw Eddie doing anything out of like our imagination, जिसमें वो he was not part of our imagination. He was a real person जो वहाँ पे आया था for his own reasons which we'll discuss right now. But none of this actually क्या बोलते हैं connects to James' reality, जो वो सोच रहा था, जो उसके मन में चल रहा था, whatever the town was actually showing him.
कोई भी ऐसा वो नहीं था, लाइक देयर वाज नो कनेक्शन टू दैट. दे वर इन द सेम प्लेस फिजिकली, एंड while that time they were all going through their own personal hell. Now ये personal hell जो थी वो एक जगह पे जुड़ गई थी. Can you guess where? Can you guess where? Any guesses? Yes, fire. And second thing, now we have come to Angela. Why was she here? आई होगी किसी रीजन से वो. She was also a real person. Got it? Let me open her notes जो मैंने लिखे थे. पहली चीज तो let's see her keywords. Abuse. We already know about this. She was abused. Both physically, mentally, and sexually by her father. Second is trauma. यार ये shift U से ना मेरे को ये की हटानी पड़ेगी म्यूजिक वाली, हर बार वो ऑन ऑफ हो जाता है. Fuck that shit. And third is self-infliction, or you can say like self destruction, yeah, whatever. Now since she was abused, she was in that trauma constantly, and खुद को basically she was trying to kill herself. She came into this town looking for her mother. इसलिए if you notice each time उसका जो manifestation था टाउन का, it was very different. It was always burning. It was always burning. Why? Because that was her personal hell. इसलिए जब लास्ट में जब जेम्स ने बोला था कि this place is awfully hot, तो उसने बोला था कि you can see it too, right? तब उस टाइम पे जेम्स की और एंजेला की रियलिटी कनेक्ट हो गई थी आपस में. और ये पहले भी कनेक्ट हुई थी जहाँ पर क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डैडी को हमने मारा था. Yes, that is where we had that both of these manifestations जो एक दूसरे से connect हुए थे वहाँ पे. That's why he can feel her trauma, he can feel her abuse. He knows कि वो self inflict करेगी, इसलिए उसने उसका knife ले लिया था उसके हाथ से, because उसको पता था deep down James is not a bad person. He has a good side as well. We'll discuss that. But that's where both of these characters got connected, ऐसा मुझे लगा. Now इसका जो था all of this क्या बोलते हैं, अब जैसे जेम्स का तो पर्सनल हेल अलग ही थी. एंजेला को साइलेंट हिल में क्या दिखता था? शी ओनली फाउंड फायर एंड टॉर्मेंट, नथिंग एल्स. उसको और कुछ दिखता ही नहीं था वहां पे. दैट्स व्हाई उसने बोला इट वाज ऑलवेज लाइक दिस. उसको सिर्फ फायर दिखती थी हमेशा. एंड शी ओनली सीज डेथ एज द ओनली एस्केप, राइट? उसको ये लगता था कि इफ आई डाई एवरीथिंग विल बी ओवर. बट मल्टीपल टाइम जेम्स ने उसको करने नहीं दिया. Now this is very important. Angela's character acts as a dark reflection of James' suffering. Now this is very important. This is where the characters got connected. She's a reflection of James' suffering. James के भी अंदर एक personal hell थी. So she was a character created to reflect that suffering out there in the real world. And उसको थोड़ा gamify करना था, तो obviously you have to fight his daddy, her daddy. Now the main thing is her personal hell is born out of others' cruelty. मतलब उसके father की cruelty की वजह से उसकी life hell हो गई थी. और जेम्स का जो पेन था वो उसी का खुद का क्रिएट किया हुआ था, उसी की गिल्ट, उसी का रिप्रेस मेमोरी, और वही चीज़ जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. इट वाज द सेम थिंग.
Alright. इन सब के पर्सनल मैनिफेस्टेशंस हैं. अब आप सोचोगे एडी क्यों आया था यहाँ पे. किसी ने बोला था कि एडी इज द मोस्ट लाइक यूजलेस कैरेक्टर जो लगा बिकॉज ही डिड नॉट गिव एनीथिंग टू द स्टोरी. आई डोंट थिंक सो. व्हाई डिड वी फाइट एडी देन. व्हाट वाज द रीजन ऑफ एक्चुअली फाइटिंग एडी. एडी क्यों आया था यहाँ पे. सबसे पहली चीज तो डिनायल. वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. ही कुड नेवर एक्सेप्ट लाइक ही वॉज. ध्यान रखना एडी वॉज एब्स्ट्रैक्ट डैडी पे जेम्स कैसे कनेक्ट हुआ था. दैट इज वेयर द रियलिटी कनेक्टेड टुगेदर. बिकॉज देखो ये क्या होता है. ऑल ऑफ दिस इज जस्ट यू नो ये मैनिफेस्टेशंस हैं. इमोशनल मैनिफेस्टेशन है. तो टाउन उनको दिखा रहा था दोनों को अलग अलग चीज़ें. बट दिस इज वेयर बोथ ऑफ देयर रियलिटीज कनेक्टेड. उसको भी वही दिख रहा था जो एंजेला को दिख रहा था. एंजेला को उसकी पर्सनल हेल्थ नहीं दिख रही है क्योंकि एंजेला उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रही है. समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. एंजेला को पता है कि वो बस तुम जो बस अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो. दैट्स इट. उससे आगे वो कभी नहीं बढ़ी. She did not understand कि what James did क्योंकि जेम्स को खुद ही नहीं पता है what James did, right? So वो सिर्फ उतना ही समझ सकती थी. लेकिन जेम्स उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था because she is a reflection of his suffering. इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था. That is where Silent Hill ने जो टाउन है whatever supernatural power आप जो बोलो it connected their realities so that James wanted to actually help Angela. That is where it got connected somehow. It was a surprise to me as well. बट दैट इज़ हाउ आई थिंक इट गॉट कनेक्टेड. नाउ ये मेरी थ्योरीज हैं. ठीक है. आई एम नॉट. मैंने स्टोरी लिखी नहीं है. दिस इज जस्ट माई थ्योरी. इट कुड बी लाइक अ मिलियन अदर थिंग्स. ऑलराइट. सो वी बैक टू एडी. फर्स्ट थिंग वाज हिज डिनायल एंड सेकंड यू कैन से सेल्फ डिसेप्शन. नाउ पहली चीज तो दिस गाय वाज इन कंप्लीट डिनायल. ये खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. ही वाज बुलीड थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ. एंड मेन चीज क्या है. दिस गाय इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ जेम्स. बट रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने कभी जस्टिफाई नहीं किया. Let's say it was a reflection of failure, of confronting. अब confronting बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. confronting गिल्ट भी हो सकता है उसका खुद का, या उसका जो डिनायल कि मैंने क्या चीज़ करी है. इट्स लाइक इट कुड बी मल्टीपल थिंग्स. इन दोनों की रियलिटी का भी आपस में कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि एडी की रियलिटी वैसी थी नहीं. एडी की रियलिटी क्या थी. ही जस्ट वॉन्टेड लाइक he got bullied multiple times in his life. उसको फैट बोलते थे, उसको फिजिकली अब्यूज करते थे, मारते थे. मतलब he had this sort of resentment जो पर्सन्स को लेके था एडी के मन में. I don't know why he came to Silent Hill. What I think वो escape करने आया था. The main thing he came to Silent Hill was to escape from everything. And since he was in denial, he was kind of getting mentally disturbed because of it. और Silent Hill ने उसकी जो भी ये feeling थी. You see one thing. Each time you see Eddie after he had a gun, there was a body beside him. ठीक है. तो वो क्या कर रहा था कि वो हमेशा ही बोल रहा था कि मेरे को कोई ये बंदा है जो चेस कर रहा है एंड फाइनली आई किल्ड हिम. एंड जब उसकी रियलिटी और डीप होती गई, जब वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होता गया, वो अपने पर्सनल हेल्थ में और ज़्यादा, जैसे जेम्स अपनी पर्सनल हेल्थ में नीचे जा रहा था, जैसे जैसे वो और ज़्यादा अपनी पर्सनल हेल्थ में नीचे जाता गया, तो उसका डिनायल जो था वो कन्वर्ट हो गया था इनटू लाइक ऑफेंसिव एक्शन. ही बिकेम मोर ऑफेंसिव. ही बिकेम मोर असॉल्टिंग. दैट्स वाई उसने एक स्टोरी बताई थी जब वो मुझसे लॉकर में, वो मीट लॉकर में लड़ रहे थे, तो उसने बोला था कि आई किल्ड दैट डॉग एंड देन आई रैन अवे एंड देन ही ऑल्सो किल्ड अ मैन जो उसका पीछा कर रहा था इन दी प्रिजन कैफेटेरिया. बट ही हैड नो लाइक ही हैड सो मच लाइक क्या बोलते हैं सेल्फ लोदिंग कि अब वो उस चीज़ से ऊपर निकल चुका था. ही वॉज कम्प्लीटली फुल ऑफ सेल्फ लोदिंग. वो खुद को ही
उस किसी लायक नहीं मानना था, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट कि जब आप किसी को इतना ज़्यादा बुली करते हो, उसको इतना ज़्यादा परेशान करते हो मेंटली कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एट पॉइंट बंदा खुद को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो ख़राब ही हूँ, मैं तो इससे कभी ऊपर निकल ही नहीं सकता। एंड देन बंदा खुद को ही लोड करने लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ। एंड देन आफ्टर सम पॉइंट यू क्रॉस इनटू डिनायल एंड देन दैट टर्न्स इनटू सम फॉर्म ऑफ डिफेंस, और उस डिफेंस में फिर आप किसी को भी मारने लग जाते हो। सो ही किल्ड हिज बुली। नाउ जेम्स उसको बार बार कन्फ्रंट कर रहा था। दिस इज वेयर सम ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ रियलिटी लाइक कनेक्टेड टुगेदर। जेम्स उसको बार बार कन्फ्रंट कर रहा था, जितनी बार भी वो आता था ही ऑलमोस्ट पॉइंटेड अ गन टू हिम, ठीक है, बिकॉज जेम्स का भी एक वो है, एक देयर वाज अ डार्क साइड टू जेम्स, एंड एडी जो था वो उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा था। ही वॉज चेजिंग हिज डीमंस थ्रू आउट द टाइम। एडी को भी ये लगा कि वाई दिस गाय कम्स एंड स्टॉप्स मी ऑल द टाइम, ये मेरे को गन हटाने को क्यों बोलता है, एंड ही स्टार्टेड सीइंग हिम एज अ बुली एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग। I don't know, it didn't make that much of a sense to me, but I guess it was alright. But the main thing, wait, ये क्या है यहाँ पे? The main thing was this girl. Now, since we know she's a real person, what was her like point of being here, and what does she represent? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सिंस शी वॉज अ रियल पर्सन, आई थिंक शी केम टू लुक फॉर मैरी। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट दैट्स व्हाट आई थिंक शी वॉज हियर फॉर। नाउ इसके ट्रेट्स जो थे, द मेन थिंग, ही वॉज इनोसेंट। आर यू गाइज हियर, या फिर चले गए सब? आई थिंक मैं बहुत बकबक कर रहा हूँ, लोग चले गए, चलो कोई बात नहीं। तो द मेन थिंग फॉर हर वॉज हर इनोसेंस। एंड सेकेंड थिंग, हर अनलोडेड परसेप्शन, या अनबर्डन कह सकते हो। नाउ आपने देखा होगा कि शी वॉज ऑलवेज हैप्पी, शी वॉज ऑलवेज लाइक हॉपिंग अराउंड, इसलिए इसको कभी मॉन्स्टर नहीं दिखते थे, बिकॉज वेन शी केम टू साइलेंट हिल शी डिड नॉट सी दिस एज अ प्लेस, एज अ हॉरिफाइंग प्लेस। शी डिड नॉट सी इट एज अ प्लेस वेयर हर इमोशंस विल लाइक यू नो कम टू द सरफेस, कोई डीप फियर या ऐसा कुछ उसको नहीं था। शी वॉज जस्ट एन इनोसेंट गर्ल। अब आप सोचोगे कि वाई शी वॉज हियर इन द स्टोरी, वाई दे इंट्रोड्यूस हर इन द स्टोरी। बेसिकली ये था कि why was James chasing her throughout the क्या बोलते हैं गेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ क्या बोलते हैं स्टोरी। मेन जो मुझे लगता है वो ये था, what connects both of these characters. I think she was a reflection of lost innocence, and she was James's reflection of what he actually loved and what he actually lost. Now throughout the time we see Laura as a fleeting image, मतलब वो कभी रुकती नहीं थी एक जगह, सामने आती थी और चली जाती थी। She was very like चुलबुली type की and all that. What James had a perception of Mary before she actually got ill, ठीक है, but James was helpless. James was completely like क्या बोलेंगे helpless. जैसे एंजेला हेल्पलेस थी वैसे ही जेम्स भी हेल्पलेस है। एंजेला भी कुछ नहीं कर पाई थी अपने फिजिकल और अब्यूज़ और ट्रॉमा को लेके, कुछ नहीं कर पाई थी वो, वैसे ही जेम्स भी कुछ नहीं कर पाया था अपनी वाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। दैट वाज हिज ट्रॉमा, दैट वाज हिज लॉस बेसिकली। सो इसलिए जितनी बार भी वो पकड़ने की कोशिश करता था, जैसे रेत की तरह पकड़ने की कोशिश करता था उसको, लेकिन वो हर बार उसके हाथ से निकल जाती थी। सो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट जेम्स लॉस्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इनोसेंट। क्योंकि बीमार होना उसकी गलती नहीं थी मेरी की, शी गॉट सिक, वो उसकी गलती नहीं थी, शी वाज इनोसेंट इन दैट।
शी वॉज सफरिंग थ्रू दैट एंड जेम्स कितना भी कोशिश करा उसको नहीं बचा सकता था. सो लॉरा वॉज अ रियल रिफ्लेक्शन. शी वॉज एडेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव what he had for Mary. That's why इनके इंटरेक्शंस कभी भी ऐसे नहीं दिखाए. बट एक सीन था, इफ यू रिमेंबर, एक सीन जहां पर जेम्स ने इसको चिल्ला दिया था एक बार, जब वो मैरी के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ है मैरी, तो इसने उसको एक बार चिल्ला दिया था. शी गॉट स्केयर्ड एंड शी रैन अवे. उस टाइम पे जेम्स का जो एग्रेशन था टुवर्ड्स मैरी कि उठो, कब तक लेटी रहोगी तुम, कब तक बीमार रहोगी, वो बाहर आ गया था. एंड देन वो उसको दिखा दिया था उसने वहां पे. दैट वॉज द ओनली टाइम ही डिड दैट. एंड देन शी रैन अवे एंड इमीजिएटली उसको गिल्ट हुआ था. इमीजिएटली जेम्स को गिल्ट हुआ था कि वाई डिड आई डू दैट, बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद गिल्ट ऑन वॉट ही हैज लॉस्ट. एंड वो बेयर ही नहीं कर सकता था उस सच्चाई को कभी भी. आई थिंक दैट्स वॉट इट वॉज. Now we already know all these enemies जो यहाँ पे दिखाए थे, that was like desire. But what was him about? Like what was this guy about? This is something that we have to talk about. Pyramid Head क्यों था वहाँ पे? And why did he look like this? Why did he look like this? पहली चीज तो, what does Pyramid Head represent? Desire or punishment? Now मुझे लगता है this character right here, in fact जो भी एनालाइज करता है सबको ही लगता है कि this character, this whole like persona जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, as you can see it never actually tries to kill जेम्स. ठीक है, वो बस उसको पनिश कर रहा था. एट वन पॉइंट व्हेन वी लेफ्ट द क्या बोलते हैं, व्हेन वी वर ऑन टॉप ऑफ द हॉस्पिटल, ही थ्रू अस बैक इनसाइड. दिस इज नॉट हिज डिजायर. लाइक ये उसका क्या बोलते हैं, पिरामिड हेड का डिजायर नहीं है पनिशमेंट. दिस इज जेम्स डिजायर फॉर पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हिज सिंस. ही इज द वन जो उसी का मैनिफेस्टेशन था, उसने खुद ही क्रिएट किया था. और जितनी बार भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होता था जेम्स का, उसके दिमाग जब सबसे ज़्यादा किस गहराई में चला गया होता था, तभी एट एग्जैक्ट उसी समय पर उसको पिरामिड हेड दिखता था कि नाउ इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट. आइदर इस पार या उस पार हो गए. दिस इज व्हाट आई थिंक व्हाट इट रिप्रेजेंटेड, लाइक समथिंग एट द बैक ऑफ योर हेड जो आपके गिल्ट को कभी भी ख़त्म नहीं होने देता है. गिल्ट का मतलब ही होता है कि इट्स एन इमोशन जो आप कभी बाहर नहीं निकाल पाते. वो आपको दबाता रहता है, बार बार आपको रिप्रेस करता है, आपको थकाने की कोशिश करता है, आपको आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाता है. ना वो आपको कुछ करने देगा, ना वो आपको खुश रहने देगा, आपको कुछ नहीं करने देगा. एंड इट ऑलवेज कम्स आउट व्हेन यू आर एट द मोस्ट क्या बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट इन योर साइकिल. वो तभी आता है. सो दिस आई थिंक वॉज द डिजायर फॉर पनिशमेंट जो जेम्स की थी. दैट्स वाई दिस कैरेक्टर वॉज एक्चुअली देयर. आई हैव सम नोट्स ऑन दिस. इज द मोस्ट आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेम्स इनर टॉर्मेंट. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is very important. It was James's inner torment. Because he's the only one who could actually see it, along with Maria. क्यों? क्योंकि Maria जो थी वो James की ही like imagination में थी. That was his like बार बार वो क्या कहते हैं, उसी ने क्रिएट किया था बेसिकली इस चीज़ को उसके दिमाग में. That's why Maria and both of these were actually connected somehow. And पिरामिड हेड जो था, दैट वाज द डिज़ायर फॉर जेम्स पनिशमेंट. लेकिन वो गिल्ट उसको, और जो रिप्रेस मेमोरी थी जेम्स की, जिससे उसने छुपा दिया था इस चीज़ को कि नहीं मैंने लाइक मरिया इज स्टिल अलाइव समवेयर, और वो ये भूल गया था कि मैंने मैरी को मार दिया है. तो इसलिए ये उसको बार बार याद दिलाता था, इसलिए बार बार वो चीज़ उसके सामने आती थी. और मरिया जो थी यहाँ पे वो मैरी का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी. डिज़ायर,
आइडियलाइजेशन सब कुछ था उसके अंदर, तो वो बार बार उसको मार देता था उसके सामने टू मेक जेम्स रियलाइज कि तुमने क्या किया है एंड यू शुड बी पनिश फॉर दैट। एंड एक बार नहीं 3 बार उसने मरिया को मारा इन डिफरेंट वेज टू डू दैट। The creature's violent action, including its brutal treatment of others in the game, notably Maria, reflects James' subconscious need to be punished for his perceived sins. Pyramid Head's relentless pursuit, and the torment it inflicts are reminders that James cannot escape his guilt. The fact that there are multiple Pyramid Heads in the later part of the game reinforces the idea that James' guilt is so overwhelming, it takes more than one form to express itself. मतलब लास्ट में हमको दो दो क्यों दिखते हैं, ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। Why there are 2 pyramid heads? Why? उसका गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि he had to multiply himself. Pyramid Head had to multiply himself and क्यों पिरामिड हेड ने खुद को मार लिया था? जेम्स ने बोला ना कि अब मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, आई एम आउट ऑफ माई गिल्ट, मैं समझ चुका हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ मेरे एक्शंस को, यू डू नॉट नीड टू बी हियर। इसलिए उस पिरामिड हेड किल नहीं करना चाहता था जेम्स को। किल करके करेगा क्या? बिकॉज वो उसकी सबकॉन्शियस में है। किल करके कैसे करेगा? यू कैन नॉट किल समथिंग दैट इज ऑलरेडी डेड। सो बेसिकली हुआ ये है कि जैसे ही जेम्स ने एक्सेप्ट कर लिया था हिज गिल्ट, there was no more need for Pyramid Head, or it just killed himself in his own imagination. जैसे ही जेम्स ने खुद का ट्रूथ कन्फ्रंट किया, उसका पर्पस फुलफिल हो गया था। There was no more need for Pyramid Head. I guess we're at the end of it. I think this is what I think happened in Silent Hill 2. I don't know if I missed anything, but this is the overall gist of it. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो एंडलेस बैटल चलती रहती। एंडलेस हो ही नहीं सकती थी बिकॉज हिज गिल्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग, पिरामिड हेड वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड हिज डिजायर फॉर पनिशमेंट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो एमो खत्म हो जाती। इन द गेम्स सेंस एमो खत्म हो जाती और वो थक जाता, उसकी हेल्थ खत्म हो जाती, तो कभी तो वो मरता, राइट, कभी तो वो गिव अप कर देता, बट वो एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को एंड देन वो कभी वो चीज़ खत्म होती ही नहीं। अल्टीमेटली ही वुड लाइक कमिट सुसाइड और समथिंग इन दैट सेंस, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, सो लेट्स रिकैप। लॉरा जो है is the only character in Silent Hill who does not see the monsters or experience any horrors in the town. This is because she is an innocent child who holds up no guilt. ध्यान रखना, she was innocent. She has no guilt. Her presence in the story contrasts with James' complex emotional turmoil. I don't think it was a reflection. You can say lost innocence का like reflection था वो, but it was a very stark contrast to that character. Laura was very happy soul, while on the other hand James was like completely opposite. Laura was close to Mary and symbolized was what James has lost, pure unconditional love and the reminder of the innocence that he might have forfeited, जो उसने छोड़ दिया था when he killed Mary. Now, जहाँ तक एडी की बात होती है, it represents the consequences of being consumed by denial and failure to confront your guilt. And जब वो Silent Hill आया था, he was like, I think he was burdened by like a lot of other things. मतलब वो just self denial था और इतने सालों से उसको mocking होती थी, bully होता था because of his weight and all that thing. इसलिए उसको जब भी दिखाया, he is either eating. Fat people क्या करते हैं when they are disturbed, they do stress eating, that's why they get fat. stress eating करते उसको दिखाया, वो उसको पिज़्ज़ा खाते हुए दिखाया, पिज़्ज़ा भी नहीं, उसको वो अजीब सा वो हाथ से वो कुछ स्ट्रॉबेरी ड्रिंक चाट के खा रहा था। जस्ट शोज हिज ग्लटनी कि वो किस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है व्हाट ही इज जस्ट इन कंप्लीट डिनायल, और वो लोगों से एस्केप करने आया था वहाँ पे। Now, as far as Angela goes, she embodies the deep scars of abuse and the cyclical nature of trauma. Now, that's why James and her both connected so well.
Having suffered severe physical and sexual abuse from her father, Angela's version of Silent Hill is filled with themes of fire and torment, visualizing her inner hell. Angela's character acts as a dark reflection of James' suffering, but highlights that her trauma is different. Now, her is born of others' cruelty, and James' trauma is born of his own pain. तो पिरामिड हेड बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था यहाँ पे. Both punishment, guilt and retribution at the same time. Wait, so end में he did provide retribution to James, right? He did. Because then he disappeared. Now about the town. Silent Hill itself functions as a purgatorial space, adapting its horror. सुनना ये. It adapts its horrors to reflect the individual psyche of those who visit. कितनी मस्त लाइन है ये. I think this pretty much sums up what this town was. So अगर आप सोच रहे हो कि it was not a real place, it was a real place where they visit. For James, the town becomes a mirror of his mental state, filled with grotesque monsters and unsettling environments that represent his grief, guilt, and subconscious thoughts. While the town is often seen as otherworldly or supernatural place, Silent Hill 2, it's clear that it draws on each character's mind to create their personal nightmare. This means what James sees and experiences is unique to him only and is shaped by his unresolved guilt and emotional pain over Mary's death. The fog, main thing. Why was there so much fog in the darkness? The fog and darkness in the town further emphasize the feelings of obscurity and uncertainty and confusion, echoing James' confusion and denial. Silent Hill acts as a catalyst for the characters to confront their deepest fears and truths, ultimately pushing them towards their redemption or damnation. So, यहाँ पर I think Angela got damned. I don't think she ever came out of it. She accepted what she was. Eddie was also damned. Laura, I think she got her redemption. And Mary took her, she did not even exist, so let's just say she was damned. Now, James का जो ending थी वो क्या था? Like, what happened to him? It depends on your ending, what you get. Either you leave Silent Hill or you drive your car into a lake and die and accept कि नहीं, I cannot live without Mary, and then when I killed her, उसका guilt इतना overcome हो जाएगा कि he will kill himself, or he either leaves with Mary or something, he accepts Mary and then he leaves with her. There are like multiple things that could actually happen to him, but वो game वहाँ खत्म हो जाता है तो उसके आगे का हमें कभी पता नहीं चलेगा unless you actually get multiple endings. So yeah, this is what the cycle of Silent Hill was, according to what I think it is. Yeah, I don't think there's any more left to discuss. I can post all this text somewhere in my Discord if you guys want to ever read it. Any other questions? तभी वो जैसे जैसे ट्रूथ के पास जाता रहा वो होटल का लुक चेंज हो रहा था. See, the thing is, होटल जो था वो it was supposed to be, that Lakeview hotel was supposed to be their happy place, right? Now, जैसे जैसे वो अपने गिल्ट को फेस कर रहा था, जैसे जैसे वो डीप अपनी पर्गेटरी में जाता जा रहा था,
ही रियलाइज्ड कि गिल्ट कितना करप्ट कर सकता है आपकी मेमोरीज को भी. ही हैड अ हैप्पी मेमोरी, ध्यान रखना, ही हैड अ वेरी हैप्पी मेमोरी ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि दिस इज वेयर ही either probably fell in love with Mary या फिर they were very happy here. तो उसकी memory यहाँ पे बहुत खुश थी. That's why when we first went into the Lakeview Hotel, it was very clean and very beautiful place. But then जैसे जैसे guilt overcome होता गया, that place got corrupted even more. मुझे लग रहा है जेम्स जो जो रीड कर रहा था या जो जो देख रहा था साइलेंट हिल में, वो चीज़ उसको पुश कर रही थी टूवर्ड्स दैट. आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन वेयर वी वर इन द म्यूजियम, हिस्टोरिकल सोसाइटी के म्यूजियम में जब हम गए थे, तो देयर वाज अ बुक ओपन देयर जिसमें वो स्टोरी बताई थी. इट वाज द लेजेंड ऑफ द टलूका लेक, जिसमें बताया था कि देयर वाज अ वुमन हु वाज ब्लेम्ड ऑफ विचक्राफ्ट इन साइलेंट हिल. एंड देयर वाज सो मेनी पेंटिंग्स जो आपने देखा होगा वहाँ पर थी, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि पीपल गॉट एग्जीक्यूटेड एंड देन लाइक वहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें चलती थी, लाइक यू नो क्या बोलते हैं, मर्डर्स होते थे, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग चीज़ें होती थी, सुपर नेचुरल चीज़ें होती थी, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती थी. तो टाउन हैड दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री, इसलिए वहाँ पे लोग सिक हो जाते थे. आपने देखा हॉस्पिटल्स में जब हम थे तो एवरीथिंग लाइक you see that all those क्या बोलते हैं 3 पेशेंट्स जिनके हमको वो ब्रेसलेट मिले थे, all 3 had some sort of connection with the same thing. All of those were tormented by their own personal hell somewhere. कभी नहीं बताया कि उनको हुआ क्या था, बट कहीं ना कहीं as a person who is not actually tormented, as a person who is not who is not facing his own personal hell, आप सामने वाले को देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या चल रहा है. आप किसी रूम में बैठे तो आपको नॉर्मल सब कुछ दिखेगा, बट सामने वाला जो अपने पर्सनल हेल में है उसके हिसाब से तो दीवारें जल रही हैं. उन लोगों को हम रियल लाइफ में पागल बोलते हैं कि अरे ये तो पागल है, अरे इसका दिमाग खराब है, ही इज मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उनकी पर्सनल हेल में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर एक्चुअली सीइंग. दिस इज व्हाट दिस होल थिंग रिप्रेजेंट्स, देयर ओन पर्सनल हेल. दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू ट्रीट देयर, बट दे डोंट इवन नो कि वो खुद उसी चीज़ में घुसते जा रहे हैं. एंड देन आई कैन साइट मल्टीपल अकाउंट्स कि जहाँ पे हॉस्पिटल में भी ये चीज़ नोट करी थी. मैरी के साथ भी हुआ था व्हेन शी वाज देयर. एंड देन इन दी प्रिजन जब हम थे तो वहाँ पर भी बताया था कि देयर इज सम सिकनेस जो कि स्प्रेड हो रही है बिटवीन ऑल दी इनमेट्स, और उनको उन्होंने अलग कर दिया था और उनकी मेडिकल रिपोर्ट किया. नाउ फिर उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में आया था कि फिजिकली दे आर राइट, एंड ऐसा कोई लाइक डेथली सिम्टम कोई भी नहीं दे रहा है कि वो इमीडिएटली उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं था. बट कहीं ना कहीं मेंटली दे वर गेटिंग डिस्टर्ब. सो इट वाज देयर. दिस टाउन messes with you. That's why it's called Silent Hill. Now, Maria is created as a response to James' yearning for Mary, but in a version that is free from illness and more affectionate and sensual, embodying what James might have wished for but could never have. So it was the town? Yes, it was the town. But the main thing where it actually started, jab let's say it happened like 2 days ago, or maybe the same day. वी डोंट नो येट कि, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी कि जब कन्वर्जेशन चल रही थी बिटवीन मैरी, जब वो अपने बिस्तर पे थी बेड में इन हॉस्पिटल, एंड विद जेम्स, ही वाज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स. लाइक अ सेन पर्सन लाइक मी वुड थिंक कि दिस हैपेंड द वेरी सेम डे. So he killed her, took her body into the car, and then drove to Silent Hill, stopped outside Silent Hill in a small क्या बोलते हैं रेस्ट स्टॉप, लाइक वो जो टॉयलेट जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था. And then he realized what he has done, and then his mind repressed his memory,
कि उसने क्या किया है, एंड देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट कि उसकी बॉडी उसके कार में है, एंड देन ही एंटर्ड साइलेंट हिल. इसलिए द टाउन वाज वंस पॉपुलेटेड. यस इट वाज. If one does not have any kind of ill feelings, emotional memory, then the town does not do anything. Yes, such as Laura. उसको तो कोई नहीं दिख रहा था. She did not see any monster. She did not see anything जो जेम्स ने उसको बोला कि this place is dangerous. She was running around like crazy. कुछ भी नहीं हुआ उसको. Because there was nothing there. She was innocent. She had no guilt. तो टाउन उसको क्यों करेगा कुछ? Nothing. Like इसको ऐसे भी लोगे, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड नथिंग कैन हर्ट यू. अगर उसका डीप मीनिंग लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं. बट इफ समथिंग इज क्रॉलिंग इनसाइड ऑफ यू, समथिंग दैट यू कांट गेट रिड ऑफ, तो इट स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट इन मल्टीपल थिंग्स आपके सामने. रियल लाइफ में भी ये होता है ना कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखने लगते हैं. आपकी तबीयत खराब होने लगती है, यू स्टार्ट सीइंग ब्लरी, and then you stop sleeping, you stop eating. There are like lots of things that happen. So town उस चीज़ को क्या करता था, यहाँ पे साइलेंट हिल क्या करता था कि उसी चीज़ आपकी उस डीप इमोशन के साथ प्ले करता था. बट सिंस लॉरा हैड नो गिल्ट, कुछ हुआ ही नहीं. शी वाज जस्ट रनिंग अराउंड द टाउन लाइक नथिंग हैपेंड, एंड जेम्स वाज लाइक, oh, this is fucking hell. Maybe the town reversed James' memory and called him inside to confront his emotions. It could be. It could be because जब आप वापस जाने की कोशिश करते हो, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई ट्राइड वाज, क्योंकि मैंने ओरिजिनल गेम में भी किया था 23 ईयर्स बैक, जब आप वापस जाने की कोशिश करते हो इन द स्टार्टिंग सीन, गेम आपको वापस यू टर्न मार देता है कि दिस इज नॉट द टाइम टू गो. एंड ईच टाइम यू सी अ रोड जिससे आप टाउन के बाहर जा सकते हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ईच टाइम यू सी अ रोड जिससे आप टाउन के बाहर जा सकते हो, वहाँ पर रोड टूटी हुई है या गड्ढा है या कारें रखी हुई हैं या समथिंग, दोज थिंग्स आर नॉट एक्चुअली देयर. इट्स जस्ट इन हिज माइंड. ही कैन लीव एनी टाइम ही वॉन्ट्स. दैट्स वाई जब भी आप किसी रोड पे जाते हो, सडनली देर इज अ ब्लॉक अहेड जो कि पहले वहां नहीं था, बिकॉज हिज माइंड इज ब्लॉकिंग इट. Because Silent Hill is actually, the town itself doesn't want him to leave unless he admits and accepts his guilt and then redeem himself कि हाँ भाई ये हुआ था, I accept it, I'm over it, let's move on. So Pyramid Head was also like created as a force of judgment and punishment. It represented James' subconscious need to, like कहते हैं ना, atonement, to atone for my sins, for what he did to Mary. It was like a very deep, I don't know, it was a very deep-seated issue, I think. Including now the monsters, including the bubblehead nurses, are manifestations of his conflicted feeling and the suffering associated with Mary's prolonged illness and their time in the hospital. Now वो hospital में जब था, he had sexual desires. Obviously he had. He was young. Mary was also young. She got sick for God knows how long. And then like all he sees in the hospital were nurses. So कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी ये चीज़, कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ दिखती थी. But since he was in guilt कि he loves Mary and he can't do anything about it, तो each time you see these जो भी nurses उसमें दिखाई है, bubble head जिसको बोलते हैं, their body is kind of like that, but when you see their face, they are always distorted. Why are their faces distorted? Not just to make them look like a monster. उसका कोई meaning नहीं है. Their faces were distorted because they were clouded by guilt. किसकी guilt? James's guilt. It was very deep. It was very deep. मैं भी बहुत टाइम सोचता रहा कि क्यों ऐसे monsters हैं गेम में कि they are like overly sexualized. Why? I don't see any reason for it. Then I got to know कि why they are like kind of sexualized. Now, one important point, the transition into the abyss. जो हिस्टोरिकल सोसाइटी वाला जो सेक्शन था जहाँ पर यू गो इनसाइड द क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल सोसाइटी से जब आप नीचे डीप में जाते हो, दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर जेम्स. द हिस्टोरिकल सोसाइटी इज अ पिवटल पॉइंट इन जेम्स डिसेंट, both literally and metaphorically, into the darkest recesses of his mind
एंड साइलेंट हिल, मतलब वो बहुत फिजिकली भी नीचे जा रहा था लिटरली, एंड अपने दिमाग में भी नीचे जा रहा था. जितना ज़्यादा वो डीप जाता जा रहा था इनटू दैट, उतना ही ज़्यादा ही स्टार्टेड his feelings started to come up to the surface. As James navigates through the museum, he finds an entryway that leads down into a series of increasingly surreal and nightmarish areas, including the prison cells and वो जो labyrinth था जो अपन जिसमें like 15,000 different ladders थी. It did not exist, वो उसके दिमाग में ही थी. This descent symbolizes James' journey deeper into his subconscious and his guilt, emphasizing the idea that understanding the truth about Mary's death require him to confront the deepest parts of himself. जब तक वो वहां जाता नहीं, it would never happen. वो वहीं खड़ा रहता. So टाउन ने उसको क्लूज दिए, मैरी ने उसको क्लूज दिए कि what do you need to redeem yourself, otherwise we were lost. अगर टाउन क्लूज नहीं देता कि कहाँ जाना है, we would completely be lost. It was not other people who gave us these hints, it was the town giving us hints कि तुम्हें ये करना है. So in a way, the most helpful character in the whole game, which was a non-character, was actually the town itself, and the second most helpful character was Pyramid Head, because they allow you to confront your sins. The Historical Society is significant in showing how Silent Hill can manifest elements tied to the past and reshape them based on the visitor's psyche. Now, this is very important. Historical Society बनी इसलिए थी so that the town of the people do not forget कि आपका town has a very sad history and a very deep and disturbing history, जो कि maybe it's supernatural in nature, but कहीं ना कहीं वो है. There was something wrong with the town, everybody said. You know, और वो जो enemies थे बिना मुंह वाले, it's the same thing. They're all infestations, like manifestations of his different type of desires मान लो, या guilt या punishment, जो भी था, it was just all part of this. आपने देखा होगा कि there was the starting में एक anime आता था, वो उसके हाथ नहीं है ना, it was like this, और वो बस ऐसे घूम रहा है, and it was just like वो फिर acid throw करता था. It was like his representation of being stuck in a place. जैसे पेशेंट्स को वो स्ट्रेट जैकेट पहना देते ना कि दोनों हाथ ऐसे लॉक हो जाते हैं, and then they can't move it. They looked exactly like that. It represented James's personal hell कि वो फंस चुका है वहाँ पे, and no matter how hard he tries, he's not going to make out of it. Pyramids serve as a enduring symbol of the human pursuit of self-awareness. That could also be it. मेरे को कुछ टेक्स्ट मिले हैं यहाँ पे. I'm gonna post them on my Discord for you guys to read, क्योंकि ये डिस्कशन तो बहुत लंबा जाएगा. There's a lot of subtopics in this, so I'm gonna post it on my Discord. So if you guys wanna read that, you can just go ahead and read that. It could be very good, could be very illuminating. So yep, that was it. Now there are multiple endings in this game, which just tells कि क्या होता है जेम्स के साथ. I know कि there is one जिसमें वो he's sitting in his car and then he drives his car into a lake. There was one जिसमें he leaves with Maria, and there may be others, I don't know yet. Too deep, yeah. But I actually enjoyed it. The game was not that difficult in terms of combat and all that thing. Obviously it was pretty easy, 0 deaths, so it was actually pretty easy. I could have started in hard mode, but मुझे करना नहीं था, since I just wanted to go through the story. I didn't want to, you know, suffer like James was suffering, so I just wanted to go through the story. I'm not gonna play this again. Never ever I'm going to play this again, because this has a different level of psychological क्या बोलते हैं, disturbance जो आपके दिमाग में आ जाता है. So obviously I'm never gonna play it again. Maybe sometime in the future, but not anytime close in the future, because last मैंने खेला था the original game which was back in 2001, and I was 23 years younger. I was 23 years younger back then, and उसने मुझे, इस गेम ने मुझे तभी डिस्टर्ब कर दिया था. अभी तो
उतना नहीं, बिकॉज वी आर वेरी मेच्योर नाउ, सो इतना नहीं होता है. बट इमेजिन प्लेइंग दिस गेम एज ए like teenager in your late teens, and then I was very sensitive. I was a very sensitive person. I am still a very sensitive person, and these kind of things, they kind of mentally, I don't know, I'm not gonna say trauma, I'm gonna say disturbed me. मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी जब मैंने गेम फिनिश किया था. 3 दिन तक आई वॉज सो डिस्टर्ब, लेकिन मैंने किसी को बताया ही नहीं. आई नेवर टोल्ड एनी वन अबाउट दिस, क्योंकि मैं किसको बताऊँ, क्या समझेगा. मम्मी पापा को बताऊँगा तो वो क्या समझेंगे, गेम ही तो खेल रहा था. दे वुड नेवर नो. किसको बताऊँगा. सो 3 days आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज आई प्लेड दिस गेम बैक देन. अभी तो कोई दिक्कत नहीं बिकॉज वी आर वेरी मेच्योर, बट कहीं ना कहीं दीज थिंग्स डिस्टर्ब यू. बट दिस हैज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग thing about like mental disorders, and how our guilt and other emotions play a very vital role in, you know, how to overcome those emotions in a healthy way. Kahin na kahin, this was very unhealthy. This was completely unhealthy. This is not how you overcome your emotions. And never go to Silent Hill, please. Whatever you do, don't go to Silent Hill. That's what I suggest. Anyways, chalo guys, that's my time. कितने बज गए, 2 बज गए. We've been discussing for the like last 1.5 hours, but I think we had a nice discussion and a very good overview of things. So अभी मैं Discord पे एक section बनाऊंगा अलग से Silent Hill 2 का. If you guys wanna read, it's a very good read, so just go through that and have fun. चलो अभी तो मैं जाता हूँ, and I'll see you guys in the next स्ट्रीम जब भी होगी. चलो, गुड नाइट गाइस.